the lives of too many people. But let's go across to. I think we have Dr. Surena Malhotra with us of the NCP. Let's go straight across to. I'm sure she must be a very happy person. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Yes, good evening. Namaskar, ma'am. Namaskar. How are you? Namaskar. So, Dr. Malhotra, you're very happy at the way things have turned out? 8 Yes, out of 10? certainly. As we used to always keep on discussing, it was a long wait, and we always tried to predict, and then okay, we kept our fingers crossed, and everybody worked so hard, all of them together. The Mahavikas Aghadi, India Alliance, all of them worked together. Unlike the whatever the predictions of BJP that oh no, Congress will be separate and there'll be internal fights and all. So there were no fights at all, and everything went very smoothly. Fantastic. Absolutely And fantastic. our great leaders predicted, Pawar Saab predicted, Rahul Gandhi also had such a positive front, and Uddhav Thackeray ji, and everything materialized very well. ब्यूटिफुली. और आपने यही इसी शो के दौरान कहा था कि सुप्रिया सुले जी मिनिमम 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी, और ऐसा ही हुआ, which is amazing. Congratulations to you. Really lovely. जैसे सुप्रियता ने भी हमें बीच में भी कहा कि बस उन्होंने मतलब फोकस 7 मंथ, बस कहीं यहाँ नहीं देखा वहाँ नहीं देखा, बस अपना मतलब अपनी जिम्मेदारी को पार किया, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगे रहे मैडम. तो यू नो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग एंड समथिंग फॉर अस टू लर्न फ्रॉम. और आज की तारीख में शरद पवार जी इज द सीमेंटिंग फैक्टर फॉर द इंडिया अलायंस. बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं. और ये भी सुनने में आया कि शरद पवार जी जो हैं वो संपर्क में हैं चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ, और अन्य घटक दल जो हैं एनडीए के, उनके साथ भी शायद संपर्क में हैं. और उन्होंने ये नहीं कहा है, मैंने आई डोंट नो वेदर दिस इज ट्रू और नॉट, बट व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप सरकार तोड़िए. उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा है. उन्होंने ये कहा है डोंट फॉरगेट योर सेक्युलर क्रेडेंशियल्स. करेक्ट. आप लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, आप उसको भूलिएगा नहीं. आप ये मत भूलिए कि आप लोग कौन हैं. Correct. So I think that's a great thing. That's the best advice a person can give. See, after all, he's concerned with the people. The people should be ruled by people, by a secular party. You know, secularism. So that is what he's more, instead of कि हम सत्ता में आए, कौन सत्ता में आए, चल everybody wants that सत्ता में हम लोग आए, definitely. But at the same time, supposing नहीं आ रहे, तो at least it should be a more secular, more open. You know, that is what his advice is. See, these are the great leaders. You know, this is what is the difference between people like Nete like Pawar Saab and then the other opposite. You know, the people. This is the difference. जी, प्रदीप जी. You know, Supriya Suna after losing also, जिस प्रकार से the BJP and the Mahayuti fielded against Sunitra Pawarji and in the Rajya Sabha and again made her an MP. Now this shows that the BJP wants to make Baramati a battleground. Yes. They want full power, full attention is in Baramati to see that Sharad Pawarji is checkmated somehow or the other. But Sharad Pawarji is never going to give up. He is going to take on, and his attacks on Modi is increased. He said, you talk about internationally you stop wars, but you can't control leaked papers in India itself. So why are you talking about wars outside the country? So how do you see this entire exercise of Sunitra Pawarji again in the Rajya Sabha, again trying to create a double power center in Baramati? As you very correctly said, I mean the BJP और उनके साथ उनके जो allies है, उनकी जो रणनीति यही रही है कि बाबा divide and rule, you know, जो ब्रिटिशों की रही थी, divide and rule. So this is what the tactic they are also trying to follow over here, कि एक दूसरे के अगेंस्ट पिट करे. मगर वो भूल गए, उन्होंने देखा नहीं क्या कि जब भी सुप्रिया ताई का जैसा मतलब her attitude was there, you know. So okay, fine, she's standing against me, so that's okay, you know. And she even wished her well, उनको hug किया, you know. So all that is okay. Somebody else is there, fine. बट ये जो बीजेपी की जो रणनीति कि हाँ उनको उनके अगेंस्ट ये करे वगैरह, वो आई डोंट थिंक दैट इज सक्सीडिंग. हाँ, वो शी इज गॉन टू द राज्यसभा, दैट्स ओके, दैट्स नाइस. अ लेडी गोइंग देयर इज फाइन. You know, I hope she can contribute to something good for Mahila Dhoran and something, you know, she can bring out some good policies. Why not? But at the same time, ये जो कूटनीति जो बोल रहे हैं, उनका जो ये है, that why they are doing it, that will not succeed. Definitely but, not. Dr. Surena Malhotra, don't you think what has happened is because everywhere
Like for example, just the other day, on the foundation day of the Shiva Sena, Yes. Ramdas Kadam attacked Ajit Dada Pawar, and these attacks are coming even from the BJP. Yes. So Yes. don't you think it is high time that Ajit Dada realizes where he is? कि कहाँ पहुँच गए अजीत दादा? He should. I think all the other people surrounding him, everybody is realizing, and I hope man ke man, he also must be realizing it, but keeping a brave front, I suppose so. Because I mean, see, बीजेपी कोई सगे सोयरे नहीं है, वो तो उन्होंने मतलब साथ आए हैं कैसे, सिर्फ इसके लिए, इलेक्शन के लिए सब लोग साथ आए हैं. तो बीजेपी का मकसद तो तोड़ फोड़ करके अपने पास लाना, तो उन्होंने तो इसी मकसद से लाए कि बाबा इलेक्शन के लिए उनको वोट ज्यादा मिले, सीट ज्यादा मिले, और फिर उनका वो मकसद सक्सेस नहीं हुआ है, स्पेशली अजीत दादा के पार्टी से नहीं हुआ है. तो नेचुरली और फ्रस्ट्रेशन ये सब, मतलब उनको बीजेपी को लगता होगा कि अभी इनको इम्पोर्टेंस क्यों दे, और ये सब दिख रहा है. यू नो, everybody doesn't have the great patience like our people, like our party. So this is being seen. जी, और अजीत दादा भी जिस प्रकार रिएक्ट कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि ही इज अंडर प्रेशर. पहले कभी नहीं करते थे. Yes. पहले ऐसे नहीं करते. जी. As we said, as we saw the whole thing, you know, from the time they separated, they went with a great this thing, taking so many people with them, and then how gradually the number of seats also, he got only 4 seats. And तटकरे जी बस एक ही सीट आ गई. तो you know how we saw the वो तो तटकरे जी की खुद की आई है मैम. वो तो खुद की आई है, वो तो उनके एफर्ट से whatever उन्होंने जो पहले. दुरुस्त बात है, लेकिन अभी भुजबल साहब तो लग रहा है ऐसा कि छोड़ के जा रहे हैं. मतलब जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि मुझे बाहर निकालिए. मुझको तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार बोल रहे हैं. लग तो रहा है. अभी भुजबल साहब के ऊपर तो अभी काफी सारी चीजें चल रही है. He is siding with the OBCs, and then Manoj Jarange Patil has been saying that, oh, this is a stage drama, that you know, he is keeping those people, he's asking the people to do the, I mean, this is what Manoj Jarange Patil is saying, I'm not saying. तो मनोज जरांगे पाटिल साहब वो तो बोल रहे हैं कि आई विल डिस्ट्रॉय भुजबल्स करियर. वेरी वेरी स्ट्रेंज. ये तो अजीब व गरीब मसला है. वो तो no But comments for that. Lakshman Hake ji, who our But friend the thing Lakshman is that Hake ji, even Manoj Jarange Patil, even Maratha, they are now, they are like, there's so many, it's been like so many now months and months together, the whole thing is going on. उनको कुछ promises मिले, फिर वो promises कुछ हो नहीं रहे हैं. ना अभी OBCs भी बोल रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर ये नहीं होना चाहिए. कुंभी लोगों का जो प्रमाण पत्र उनको दिया, सर्टिफिकेट दिया, whether what is the valid, whether it's a valid ones, whether fake थे, क्या थे, इसके लिए अभी आप देखिए. तो ये दोनों, और भुजबल साहब भी बीच में आ रहे हैं, तो बिना दोनों जातिगत मतलब तनाव जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है. And that is going to be, I mean, I hope there is no untoward things happening between them, you know. They should realize that सरकार खाली बात करती है, ये करती है, they want that दोनों में भिड़त हो जाए, ये होना नहीं चाहिए फिर. How do you see it? You know, one ministerial post was offered to the NCP Ajit Pawar, and you suddenly had differences. Praful Patel and then Sunil Tadkare group saying that he should be given the minister. He's a lone elected Lok Sabha member, and then Sunil Tadkare. So how do you see झगड़ा चालू होगा? Because at last they abandoned that. बोले हम लेंगे नहीं, हमको तो cabinet minister. It never happens. So you have any information on what exactly transpired? Is Sunil Tadkare ji trying to assert himself that I am more capable? I actually qualified to be the minister, and I'm not being given that. In fact, a lot of people from the Raigad where he came, so they were totally with him. They said no, he should have been given the ministership there. How do you see Dr. Malhotra? As he's the only one who has shown the results, he's given the results, and he's so naturally he's going to feel, and that's but human nature. I mean, naturally he's going to feel that okay, I've worked and I've done something which I was supposed to do. And Praful Patel ji is given this thing that नहीं, I was in the केंद्र से मैं अभी ये पोस्ट नहीं, ये नहीं चाहिए वगैरह. इनफैक्ट जब भी इनका जो भरा जो सबमिट करने गए थे सुनेत्रा जी पवार उनका, तो उधर भुजबल साहब भी थोड़े से दूर हट रहे थे, ऐसे दिख रहा था. Then somebody pulled him, you know, because he was also interested in the same seat. तो जहाँ बड़े नेते हैं तो वहाँ पे ये सब चीजें तो होने वाली है. अभी now it depends on the level of maturity, how they handle it and how they are going to stick together.
So तो आपको लगता है कि भुजबल साहब रहेंगे वहाँ? मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद आपके पास वापस आ रहे हैं, लगा ऐसा रहा है। that depends now on या Pawar Saab and क्योंकि because आई Pawar, डोंट थिंक उद्धव जी विल वेलकम हिम, no, क्योंकि जो Pawar Saab स्पेकुलेशन maybe, yes, sorry. क्योंकि स्पेकुलेशन चल रही है कि शायद वापस जाएंगे शिवसेना में, मुझे नहीं लगता है। दैट्स माय थिंकिंग। Because उद्धव जी also said कि नहीं हम लोग नहीं वेलकम करेंगे, जो गए हैं वो गए हैं. Even Pawar Saab has also said the similar statement. But then it's politics. Let's see what happens. लेकिन पवार साहब का जहाँ तक सवाल है, भुजबल जी को मना नहीं कर सकते। अगर भुजबल साहब वापस आ जाएं तो अजीत दादा को शायद मना कर दें, भुजबल साहब को मना नहीं कर पाएंगे। But then that is more in the future. But ma'am, what do you think will happen? We have heard that many people are trying to come back. Let us unless it's of course वो officially. तो बोला है उन्होंने, शायद yes. सुप्रिया सूले जी ने बात भी करी कि कोई 17 लोग हैं जो संपर्क में हैं। And Supriya Sule ji never exaggerates, she never lies. She doesn't exaggerate. And in fact मैंने अभी कहीं पढ़ा कि अजित पवार जी उनके ग्रुप के भी 2 पाटिल वो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं. आई थिंक वन ऑफ देम इज ज्वाइनिंग कांग्रेस एंड ऐसी भी बात 202 जन वहां से निकल के आ रहे हैं. ऐसा अभी जस्ट रिसेंटली आई जस्ट रेड दैट. जी तो लेकिन एक चीज तो हुई है. What has happened because of the Lok Sabha result is this. Yeah. That till now we were only hearing about Sharad Pawar Saab's people wanting to leave him to join Mr. Ajit Dada Pawar. Now the situation is exactly reversed. It has been reversed. Correct. Now the rumor is all about Ajit Dada's people wanting to leave him to rejoin Sharad Pawar Saab. That's what has happened. Pradeep ji. Yeah. That's why he wants a cabinet expansion. Ajit Pawar ji बोले जल्दी cabinet expansion कीजिए. I think नहीं तो the party might just now. Sharad Pawar Saab said that we are going to win 155 seats. Yes. And yes. Sharad Pawar Saab, when he says that, he says, as per my Lok Sabha performances right now, what we have done, we are entitled, we are easily scoring 155. And he reminded Prime Minister Modi that Supriya Sule has won by bigger margin than Prime Minister Modi in Varanasi. Now he wanted to put a fact straight to Prime Minister Modi that look, we have done better than you. How do you see that particular statements? And he had to in fact give us more votes. Yes. He has said that. Yes, he yes, said yes. that. वो बड़ा अजीबोगरीब मसला था वो जो कहा उन्होंने, भटकी हुई आत्मा, भटकती हुई आत्मा. Yes, that was a वो such तो a bad I thing thought to that do. was in really bad taste, man. That was a bad thing. And I'm telling you, apart from, I mean, all of us, like everybody fighting, doing their work very diligently. Apart from that, ये election जो है ना, जो जनता ने हाथ में लिया, ये इलेक्शन जनता ने हाथ में लिया. जनता ने ये मुद्दे मतलब इन चीजों पे ध्यान दिया कि कौन कैसा भाषण देता है, कौन क्या बात कर रहा है. और जो महाविकास आघाड़ी है वो जो मूलभूत जो रियल मुद्दे थे उनके लिए उनके ऊपर बात कर रहे थे, उनके ऊपर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. जैसे पवार साहब अभी भी मतलब इलेक्शन हुआ नहीं, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ तो भी उनकी फार्मर्स को मिलने के लिए उनकी वारियां चालू हो गई. He's met so many different places, farmers of different places, and he's genuinely worried कि farmers को जो मतलब उनको दिक्कतें आ रही है because of the अवकाली बारिश हो रहा है, सूखा हो रहा है, all those things. So he is into that, and farmers also they realize कि हमारे साथ कौन है, मतलब हमारे father कौन है, who's the one who's really going to help us in long run. So people realize all that. So definitely, why not? 155, definitely. Of course, everybody has to work very hard for all that. But then as long as you are genuinely with the people's problems, you have your genuinity without, over exaggeration of things, boasting and all, ये सब नहीं होगा तो why not? हो जाएगा. And the other thing which is very important is, in Yes. spite of all these leaders campaigning against Supriya Sule ji, against Yes. Sharad Pawar Saab, Supriya Sule actually got 51.85% of the votes. Almost, that's almost 52%. Yeah, that was a great victory. And Sunitra Pawar ji got 40.54% of the votes. I mean, it was a massive victory. There's a difference of almost 10% in votes. It was a massive victory. And one thing, I mean, Supriya, as we saw, every day she was doing her duty. She was going and campaigning. She didn't get, flustered by the Ajit Dada's talks and all that. She, smilingly, she, answered all those things. At the same time, she stuck to her campaigning, her routine.
without even bothering, what's happening on the other side. And in this particular election, let me also Yes. remind our viewers, ये मैं पहले भी आंकड़ा दे चुका हूँ आपको, जी. अपने viewers को, कि भाई अभी तक उनको वो हर साल जीत के आई हैं, आज तक अभी हारी नहीं है सुप्रिया सुले, बारामती से। इस बार भी जीती है, लेकिन इस बार एक और चीज हुई है, सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं उनको इस बार, 7,31,400 वोट पड़े हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर सुप्रिया सुले दिस टाइम, विच इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मतलब वोट कटने के बजाय उनके वोट बढ़े हैं। जी मैम। बिकॉज हियर लोगों ने रियलाइज किया था कि ये जो बारामती में जो हो रहा है ये सही नहीं है। ऐसे आप किसी की पार्टी जो बारामती कर, उनको तो मतलब एनसीपी पवार साहब तो जन्मदाता है एनसीपी के, ये तो, और बारामती में उन्होंने कितना काम किया हुआ है ये सब लोगों को मालूम है। So nobody really liked Ajit Dada taking away the whole thing. If taking away the Paksha ka chinna, of course it's legal, it's in the court. But I'm trying to say that we are the NCP. So people have not liked it, and this is the answer. They have given the answer through this election itself. Democracy से democratic way से लोगों ने उनको सही जवाब दे दिया। Dr. Malhotra, we talked to some locals from Shirur. Shirur, totally local people. They said, yeah, Adal Rao Patil also was there, and Amol Koleji was there, and the reaction the people gave that no, we voted for Sharad Pawarji because he has been backstabbed. We have got sympathy for Sharad Pawarji because these people all backstabbed him. And they said, what Adal Rao ji has been jumping from party to party, so nobody. So, the message is clear across the state that injustice has been done against Sharad Pawarji. They have done it, and a lot of sympathy. So when Sharad Pawar says 155 will be done, I think 100% it is going to be done. Yes, definitely. Now we have the confidence. Now we have seen Pawar sahab had said 30 and 30. And you got 31. It was 31. So it is like absolutely, really, whatever is predicted has come through. Ji, bilkul. And I mean, we are elated at the 80% strike rate. That's fantastic, phenomenal. Absolutely fantastic. But Prime Minister Modi, he says, हमने विकास के सपने भी देखे हैं और विरासत भी संभाले हैं. Vikas, he says, in Maharashtra mein, in Palghar, he has opened one of the biggest ports of the world. It figures in 1 out of 10 biggest ports of the world. And 1 million jobs, Prime Minister Modi, he says, is going to create where Palghar, Maharashtra is concerned. And विरासत भी संभाला, बोले नालंदा यूनिवर्सिटी 800 साल के बाद हमने बनाए हैं, तो हमने विकास के सपने भी देख रहे हैं और विरासत को भी संभाल रहे हैं। That's how में ही देख रहे हैं, लोगों के सपने में या लोगों के रियलिटी में ये चीजें नहीं आ रही है। लोगों को ऐसे फील नहीं हुआ इस टाइम कि कुछ विकास की बातें हुई, एक हाथ दूसरी चीजें हुई, जैसे उन्होंने अयोध्या राम मंदिर को भी विकास में जुड़ा दिया था, पर लोगों ने ये सब चीजें नहीं देखी। और ये जो पोर्ट है वहां पे कितने सारे इश्यूज भी है, एनवायरमेंटल इशू है, वहाँ पे जो मत्स्य उद्योग है वो मतलब उसको प्रॉब्लम आने के चांसेस है, जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स का है उनको प्रॉब्लम आने, रीलोकेशन की प्रॉब्लम, ऐसे कितने सारे प्रॉब्लम्स है। तो सिर्फ बोलने से आगे चल के क्या होने वाला है, दिस अ लॉन्ग वे टू गो। Just like Aramco, the Aramco refinery was supposed to come in Konkan. That was about, I think, around 2014, 2015. Which was supposed to be, what, a $60 billion project or something like that. I don't think that we've even got the foundation stone as yet. Nothing. So all these announcements sound very good, but where is the delivery? There is no delivery. Even in our areas also, there are so many, small little beautification projects. They start. There is a nariyal biriyal foda jata hai. People gather. People feel very nice. So BJP has called them for such an opening ceremony, and then after that there is nothing seen about those things. Serena Malhotra ji, chalte, would you like to say something in Marathi to thank the people of Maharashtra for the kind of support they have shown for Sharad Pawar ji and Supriya Sule ji? Please go ahead. महाराष्ट्रातल्या जनतेला आमच्याकडून म्हणजे आम्ही भरपूर थँक्यू बोलतो, धन्यवाद देतो की तुम्ही आमच्या बरोबर महाविकास आघाडीच्या बरोबर राहिलात, आमच्या पवार साहेबांच्या बरोबर राहिलात। पवार साहेबांनी एवढी अतिशय मेहनत केली आहे, ह्या वयामध्ये त्यांनी एवढी मेहनत केली, सुप्रियाताईंनी एवढी मेहनत केली, आणि जे आमचे सगळे जे कॅन्डिडेट्स जे उभे राहिले,
जे मतलब त्यांनी म्हणजे पवार साहेबांची साथ सोडली नाही, एवढे लोक इकडून तिकडे निघून गेले आणि हे लोक जे होते पवार साहेबांना फेथफुल होते आणि ह्या सगळ्यांना तुम्ही विजयी केलं, म्हणजे अतिशय आम्ही थँकफुल आहोत. आणि आता पुढेही आता तुम्ही आम्हाला हेल्प करा की महाराष्ट्रामध्ये पण आपलं सरकार, महाविकास आघाडीचं सरकार येईल आणि ते सरकार आल्यानंतर मग तुम्ही बघा की महाराष्ट्राचं कसं वैभव परत एकदा आपल्याकडे येईल. आता जे चालू आहे स्थिती ती पूर्णपणे, आणि कुठे गेला माझा महाराष्ट्र अशी म्हणण्याची स्थिती येणार नाही. आपण असं म्हणू, अरे वा महाराष्ट्र कुठच्या कुठे गेला. ही एक गोष्ट आहे. थँक्यू. क्या बात है, क्या बात है. जय महाराष्ट्र, जय भवानी. थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच मैम, and congratulations again. Thank you. Thank you. So Sharad Pawar was on the button when he predicted the number of seats the MVA would get, and now he says 155. Exactly. So you have to take him seriously. We have to take him seriously. He is not like those exit poll agencies. And now he told the MVA, I am not going to settle for less seats. I settle for less seats than Lok Sabha because I want to get everybody together Yes. to defeat Prime Minister Modi. But now, Vidhan Sabha, I want my share. That's what he said. Well, everybody wants their share. लेकिन जैसा संजय राउत जी ने कहा कि जनाब 288 को by 3 डिवाइड कर लीजिए और सबके एक एक Equal partners. Absolutely, that's what he said. That is 76. Congress is getting aggressive. Congress said we are going to fight 288. Why not? And I think Kishore Tiwari ji कल आपको बोल रहे थे, Nana Patoli thinks he already is Chief Minister of Maharashtra. वो उनको तो लग रहा है उनका राज्याभिषेक हो भी गया. Yes. उनको लगता